Once again, welcome class 9 students of CBSE in same lesson, the fundamental unit of life. Now, what is going on? In previous videos, we have studied about the cell organelles. Cell organelles is the part of the cell. The organelles or the parts which is present inside the cell is called the cell organelle. हमने पहला सेल ऑर्गेनल पढ़ लिया था, that is the plasma membrane. Now let's move towards the second cell organelle. The second cell organelle is the cell wall. मैंने आपको पहले भी कहा है, साइंस से बहुत सारा काम उसी से आसान हो जाता है कि हम इसके मीनिंग को समझ लें. सेल आप जानते हो, what is the cell? Cell is the smallest structural and functional unit of the body. And wall, simple word is wall. Wall is not a new word for you. तुम जिस घर में रहते हो उसके आसपास वॉल है. What is the role of that wall? उस वॉल का काम क्या है? वो आपको प्रोटेक्ट करता है. क्या आप उसको एक मुक्के से तोड़ सकते हो? नो, वो बहुत हार्ड होता है, वो रिजिड है, प्रोटेक्टिव है, और हमारे घर के बाहर हमेशा वॉल होता है. दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द सेल वॉल ओनली. बट वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. इट इज प्रेजेंट only in plant cell. Only in plant cell, it means it is absent in animal cell. Okay, it is known that it is absent in animal cell. Now how we could define the cell wall? First is the definition of cell wall. What is cell wall? मैंने अभी आपको कहा what is the role of the wall? It is outermost, first thing. It is protective, second thing. It is rigid, that is hard. It is the third thing. So that is the nature of cell wall also. So how can we define it? Cell wall is outermost rigid, protective. Cell wall is outermost rigid, protective, supporting layer present outside the plasma membrane of plant cell. हमने प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कॉमन ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल. बट सेल वॉल is present only in plant cell. So cell wall is similar as the wall of our house. It is outermost, सबसे बाहर होता है. It is rigid, hard होता है, बहुत आसानी से तोड़ना possible नहीं है. It is protective, protect करने का काम करता है, and support the plant also. So that is about the cell wall. Now what are the characteristics which is present in the cell wall? The second topic is the characteristic of cell wall or properties of cell wall. Okay, what are the various characteristics which is present in the cell wall? अभी आपने जितना पढ़ा उसके हिसाब से आप बोल सकते हो. It is outermost layer. It is outermost layer of plant cell. Second, it is rigid in nature. Third, it is made up of cellulose. What is cellulose? It is a type of carbohydrate. चलो, एक कौन सा क्वेश्चन है? हम घास नहीं खाते. घास कौन खाता है?
जब भूसा कौन खाता है? ऑल द एनिमल्स, ठीक है, कौन खाता है? ऑल द एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम घास खाए तो क्या होगा? सिंपल सा आंसर, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे लिए एक तरीके से वो वेस्ट है, क्योंकि वो हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो दैट घास इज एक्चुअली द सेल्यूलोज, ओके। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल वॉल। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. Functions of cell wall. What are the function of the cell wall? As we studied in the definition, it provides mechanical support. It provides mechanical supports to the plant. प्लांट सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द सेल वॉल. ठीक है. सेकेंड, इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर और शेप टू द प्लांट सेल. इट प्रोवाइड अ शेप और स्ट्रक्चर टू द प्लांट सेल. So the plant cell has a definite shape. Why the plant cell has a definite shape? A plant cell has a definite shape because of the presence of cell wall. The cell wall provide a definite shape to the plant cell. Third, it supports the plants. Okay, not only provide the plant, mechanical support the plant, provide shape the plant. These all are the functions of the plant cell. Functions of the cell wall. So these are the important function and the property of the cell. In your textbook, one experiment is given there. That is little bit related to the cell wall. When I meet with my student in school, then I explain that experiment in class only. It is a simple experiment, but it is performed in class because we need a microscope for studying it. Okay. One more important thing is there. Cell wall was discovered by. Robert Hooke in 1664. Okay. In 1664. In your textbook, one experiment is given there. That is the activity number 5.6. Okay, छोटा सा activity है. Let's move there. फिर हम समझ पाएंगे कुछ दो नए टर्म्स हमको इस लेसन में पढ़ने हैं. एक छोटा सा RHEO लीफ के साथ एक्सपेरिमेंट है. This experiment is also called RHEO leaf experiment. Okay? RHEO एक colored leaf होता है, little bit purple color का leaf होता है. ठीक है. अगर हम इसका एक स्किन निकालें, इसका एक पतला सा लेयर निकालें और उसको हम एक शुगर सॉल्यूशन में, कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन में डालें, तो क्या होगा? जो लीफ है, लेट अस सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द RHEO leaf, somehow like this. This is called the cell wall and this is the plasma membrane. I am not going to drawing the full diagram. हमको पढ़ना है, हम बाद में बनाएंगे. This is the cell wall and this is the plasma membrane. इसके पहले वाले वीडियो में आपने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा था. So let's remind the osmosis process also. This is the cell of the RHEO leaf. हमने क्या किया? इस सेल को हमने यहाँ से कट किया और कट करके इसको एक कंसंट्रेट शुगर सिरप में डाल दिया. जब हमने इसको कंसंट्रेट शुगर सिरप में डाला तो क्या होगा? ये जो सेल था
although we are not much labeling it. हमने यहाँ पे this is the cell wall, ये हमको समझ में आ रहा है. What happened with the plasma membrane? ये जो plasma membrane है ये shrink होने लगेगा. ये plasma membrane जो है वो यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा. And this we are easily visible in the microscope. ठीक है? This is the normal position. This is the normal position. And this is the position when it gets shrink. मुझे लगता है shrink से कुछ याद आना चाहिए. In our previous video हमने देखा था कि shrinking का प्रोसेस होता है और shrinking का प्रोसेस कब होता है जब हम किसी hypertonic solution में plant cell या animal cell को डालते हैं. ठीक है? अगर हम किसी hypertonic solution में डालेंगे इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो सेल के अंदर के पानी को बाहर की तरफ पुल कर लेगा. ठीक है, बाहर की तरफ पुल कर लेगा तो क्या होगा, इसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा और वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा अपने एक छोटे से वॉल्यूम में. ठीक है, वैसे भी तो हमने इसको ऑस्मोसिस से पढ़ा था. बिकॉज द सब्सटेंसेस मूव आउट फ्रॉम इनसाइड द सेल. यहाँ पे हो क्या रहा है, सेल के अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और अंदर की तरफ से जब वाटरी मटेरियल, लिक्विड मटेरियल बाहर की तरफ से निकलेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाएगा. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि अंदर से बाहर निकल रहा है. तो एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस. तो ये टू कंडीशंस थे. फर्स्ट इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस and second the solution in which we kept it, this is the hypertonic solution. It is hypertonic solution. ठीक है, आपको पता है what is the hypertonic solution? The concentration of outside the cell is more as compared to the concentration of inside the cell. So this is that one experiment when we kept the RHEO leaf in the concentrated sugar solution, the plasma membrane gets shrink. And this process of shrinking of the plasma membrane is called the plasmolysis. So new definition is here that we call the plasmolysis. Now we are going to define plasmolysis. Now what is the plasmolysis? It is the process of shrinking, process of shrinking or contraction of protoplasm of plant cell, protoplasm, all the liquid content which is present inside the plasma membrane is called the protoplasm. As a result of loss of water from it is called plasmolysis. Now you have to remember two things. That is thing to remember. Okay. First, it occurs in hypertonic solution. And second, it is actually the process of exoosmosis. You know what is the osmosis? Is movement of substance from one concentration to other concentration through semi-permeable membrane. If the substance is moved inside out, then it is called the exo. Exo का मतलब ही होता है out. So it is the exoosmosis process. We are able to explain with the help of diagram also. Let us suppose this is a container containing hypertonic solution. Okay. और इसके अंदर we are going to place one cell.
हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने एक सेल को प्लेस किया, एक प्लांट सेल को प्लेस कर दिया. Okay, this is hypertonic solution. And this is simple the cell, plant cell. Plant cell from the RHEO leaf, it is also there. If we kept it for some time, what happened? The protoplasm of this cell get shrink and it is clearly visible in the microscope. Okay, and this process is called the plasmolysis. But what happened if we kept this plasmolysed cell? The cell is called plasmolysed cell. This is plasmolysed cell. Okay, if we kept this plasmolysed cell in hypotonic solution, this is hypotonic solution. अगर इस सेल को हम फिर hypotonic solution में डालेंगे तो क्या होगा? Let's see the result. Okay, what is going on here earlier? See, हमने एक कंटेनर लिया और एक कंटेनर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कलेक्ट किया और एक सेल को इसके अंदर रखा. Like this. Okay, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन था. This is one hypertonic solution. Hypertonic solution. And this is a cell, plant cell. Okay, this is normal condition. ये एक normal condition है. Okay, then what happened after few hours? हमने क्या देखा? We saw the cell which we kept in hypertonic solution. The protoplasm of that cell is shrinked. उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो shrink हो गया और हमने इसको क्या कहा? We call it the plasmolysed. We call it plasmolysed cell. Plasmolysed cell. Okay, हमारा सेल plasmolysed हो गया and the process is called plasmolysis. Okay, हमने क्या किया? इस सेल को दोबारा से एक दूसरे सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया and that solution is of hypotonic nature. Hypotonic solution. Okay, जब हमने इसको इसके अंदर प्लेस किया तो क्या होगा? The protoplasm retain its place. The protoplasm retain its position. Okay, जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपना पोजीशन रीगेन करेगा, वो स्वेल हो जाएगा. Okay, it swells up. वहां पे क्या हुआ था? Get shrinked. यहाँ पे क्या हुआ? ये swell हो गया. And this process is called DEPLASMOLYSIS. This process is called DEPLASMOLYSIS. DEPLASMOLYSIS, plasmolysis का against हो जाना, reverse हो जाना, that is called the DEPLASMOLYSIS. Now we are going to define the process of DEPLASMOLYSIS. May I rub this? Okay. Now here the term is DEPLASMOLYSIS.
what is the deplasmolysis? It is the process. It is the process. Just reverse the plasmolysis process. So what is this process? It is the process in which water enters inside the cell from outside. ठीक है, बाहर से जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर करता है. ठीक है, और उसके कारण क्या होता है? द सेल स्वेल्स अप. Hence the cell swells up. But here also two things you have to remember. Now what are the two things you have to remember? First, that it occurs in hypotonic solution. And what is the second thing you have to remember? वहाँ पर हमने देखा था exoosmosis. It is actually the process of endoosmosis. एक्सो इज आउट, एंडो इज इन. ठीक है, एक्सो का मतलब है आउट, मतलब सेल के अंदर से मटेरियल का बाहर जाना. एंडो का मतलब है इन, मतलब बाहर से वाटरी मटेरियल का सेल के अंदर आना. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस. Now one question is there, what is the difference between the plasmolysis and deplasmolysis? Plasmolysis is the process in which cell shrink up in their cell wall. And what is the process of deplasmolysis? The cell swells out. Why this process is going on? Because the plasmolysis occur in the hypotonic solution and deplasmolysis occur in hypotonic solution. That process, plasmolysis, is also called exoosmosis and deplasmolysis is also called endoosmosis. That is the basic difference between these two. Now one more thing you have to remember. There are lots of aquatic plants are there. बहुत सारे aquatic plants present हैं. ठीक है, बहुत सारे aquatic plants हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और पानी का कंसंट्रेशन हर समय वेराइड रहता है. वेराइड मीन्स अलग अलग रहता है. फिर उनके बॉडी में क्या होता है? मैंने आपको कहा जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं जो कि रहते हैं, दे कंटेन द सेल वॉल. सेल वॉल जिसके पास भी है, सेल वॉल किसके पास प्रेजेंट है? द सेल वॉल इज प्रेजेंट. Cell wall is present only in plants. It is present in plants. ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास सेल वॉल होता है. जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके पास सेल वॉल होता है. जितने भी साइनोबैक्टीरिया है उनके पास भी सेल वॉल होता है. और प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा, सम प्रोटिस्टा, they also contain the cell wall. So cell wall is present in all this species. They are especially aquatic. Plant को छोड़ दो, बाकी सब especially aquatic ज़्यादा है. अगर ये पानी में रहते हैं और let us suppose कि पानी के नेचर के हिसाब से, this is the, let us suppose the cell. ठीक है, अब पानी का जो कंसंट्रेशन है वो वेराइड होता है, हर समय अलग अलग होता है. अगर इसके अंदर बहुत सारा पानी रश होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा? ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्वेल हो जाएगा. ठीक है, लेकिन स्वेल हो जाएगा तो जैसे एक बलून है, आप उसके अंदर हवा भरो, एक लिमिट के बाद वो बलून स्प्रेड होना, प्लास्टिसिटी उसका खत्म हो जाएगा, स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगा और वो बलून फूट जाएगा क्योंकि तुमने बहुत सारा हवा उसके अंदर भर दिया. लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता. जैसे इसमें ज्यादा डीप्लास्मोलिसिस ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसके अंदर एक प्रेशर अंदर से जनरेट होगा, लेकिन ये जो सेल वॉल है वो एक दूसरा प्रेशर भी इसके ऊपर जनरेट करेगा. और जब सेल वॉल प्रेशर जनरेट करेगा तो वो हेल्प करेगा उसके शेप को रिटेन करने के लिए, उसको ब्रस्टिंग से बचा देगा और इस सेल को अलाइव रखेगा, जीवित रखेगा.
So this is the process that we call the plasmolysis and deplasmolysis. तो आज हमने क्या पढ़ा? We are studied about the second cell organelle, that is the cell wall, which is present in plant, bacteria, cyanobacteria, and some protista also. What is the cell wall is? It is the outermost rigid protecting layer which is present only in the plant cell. Now students, you must like my video. You must share it with all of your friends who are in 9th class. Put comments if you want to ask any question or if you want any. And it is important, you have to subscribe my channel. Why subscription is important? Because you get the previous information of uploading the video. And important also is the press bell icon. Now bye bye for today. We will meet again.